Good. Okay. Right. Let me zoom this a little bit so that you can see. Okay, so as I told you, today we have an introductory class as far as this particular course is concerned. So uh, the course number is ME306, and the title of the course is Power Plants 1. Why Power Plants 1? Because there is another course, I think, in 7th semester, that is Power Plants 2. So the remaining portion of this is basically covered over there. So for that reason, we have two courses for Power Plants. One is Power Plant 1 and the other one is Power Plant 2. We have 3 hours, credit hours for this particular course, and the course is theory type course, right? And we have 6 semesters. Right. So today we will discuss and we will summarize that what we will be studying in this particular course, okay, and what are the books involved, so that you know the overall picture of this particular course. Okay. So as I told you earlier, this course is not too dense because the course is divided into 2 parts. So some of the course content that we will be studying in this particular course of Power Plants 1, and the remaining portion is covered in Power Plants 2, right? So if you look at the course objectives, so these are the dedicated chapters and the dedicated topics as far as this particular course is concerned, okay? So what we want from our potential students, that after studying this particular course, they need to know about, you know, this gas turbine engine, what gas turbine engines, what gas turbine power plants are, okay? And similarly, they need to know about the nozzles and their application, and the application is in jet propulsion. And similarly, we need to know about the turbo machinery, okay, and then positive displacement machine, or you can say this is also the third bullet is the rotodynamic machines, okay, and the fourth bullet is positive displacement machines, and the last one is reciprocating internal combustion engine, okay. Before going into the detail that what are the particular topics over here, let me tell you about the book, okay. And the book, there are basically 4 books, right? That is Applied Thermodynamics for Engineering Technologies by Stop and M.S.K. I think you have studied this. Maybe you have studied this in your Thermodynamics 1, or if not, then actually this is a very basic book for thermodynamics, okay. But uh, the portion that we will be studying in our power plants is also here in this particular book, okay. So this is actually the textbook, you can say, available in library, and similarly I will also give you the soft copy of this, so you can just, this is the 5th edition. I have the 5th edition, you can have any edition, but the 5th one I will be following. Then there are also some other books that the basic engineering thermodynamics by Longman, and similarly fundamentals of classical thermodynamics by Van Walen and Sontag, and similarly we also have another book of engineering thermodynamics and work in heat transfer by Rogers, okay. But ये 4 बुक्स हैं, लेकिन हम जो है इस फर्स्ट बुक को फॉलो करेंगे. एंड लेट मी आल्सो टेल यू कि ये जो हमारे पास टॉपिक्स है ना, these topics, right, you can see I have actually these red arrows in front of them. So we have gas turbine cycle. This topic is basically a chapter of the book that is written by Stop and M.S.K, right? And this is chapter 9 of that particular book. तो ये जो है ना chapter 9 है. Similarly, nozzles and jet propulsion, this is chapter 10 of that particular book. And this turbo machinery is chapter 11. And positive displacement machines, this is chapter 12 of the book that is written by Stop and M.S.K. And reciprocating internal combustion engine, this is chapter 13. So you can say that if you take this book, let me show you, where is that? Yeah, this one. Okay, this is 5th edition. We have Applied Thermodynamics for Engineering Technologies
Okay, and that is written by a very famous book. Okay, and I have a soft copy of this, so if you want I will also upload this on your Google Classroom. ठीक है, so यहाँ पे अगर आप देख लें, so this is if you look at chapter, this is actually gas turbine. I think it is not matching us. So you can see this one is uh, yeah. Okay, so this is gas turbine cycles, or gas turbine power plant in particular, and then we will be talking about the gas turbine cycles. Chapter 10 is nozzles and jet propulsion, and then after that we have rotodynamic machines. I told you this is chapter 11 in this particular book, and then we have positive displacement machines like reciprocating compressors, etc. And at the end, this is reciprocating internal combustion engine. Okay, so in summary, I would like to say that if you have this book, fifth edition of Applied Thermodynamics for Engineers by Stop and M.S.K, so that is basically enough to cover all the topics. Those are included in this particular course, right? तो ये जो है ना यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये बुक अवेलेबल भी है और आप जो है ना इसको लाइब्रेरी से भी ले सकते हैं, right? Now what we will be studying in gas turbine cycles and gas turbine power plants. Okay, okay, let me first tell you what, बल्कि मैं आपसे पूछता हूँ, anybody who know what is a power plant in simple words? Power plant क्या है? सर ये प्लांट्स वगैरह होते हैं, ये पावर ट्रांसफर करते हैं, पावर देते हैं। पावर देते हैं। एक मैं एक से पूछता हूँ, ठीक है? अरसलान आप बताओ, व्हाट इज पावर प्लांट? सर ये प्लांट्स वगैरह होते हैं, सर एसी प्लांट्स वगैरह होते हैं ना सर, इस तरह पावर प्लांट्स होते हैं, पावर जो है ना पावर देते हैं सर, जनरेट करते हैं, पावर देते हैं, पावर जनरेट करते हैं। ओके, के मोहम्मद हुसैन, कैन यू गिव मी एनी एग्जांपल ऑफ पावर प्लांट? जी अब्दुल रहमान खान। सर ये स्टीम बॉयलर्स भी सर के एग्जांपल्स है, और बॉयलर, ओके, ऐसी प्लांट वगैरह नहीं सर? यस, यू आर राइट। मोहम्मद सऊद खान। ये सर जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जैसे प्रोड्यूस होती है तो वो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स है। इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स है। Okay, let me tell you, power plant is basically power source, you can say, right? Power plant, where the power is produced. So, give me some examples, Akif Javed and Akif Ashraf. Give me some examples सर, सर जैसे सीमेंस वगैरह के पावर प्लांट्स होते हैं इस तरह के सर। जिस तरह क्या एग्जांपल क्या है? सीमेंट वगैरह, सीमेंट के पावर प्लांट्स होते हैं सर, बड़े लगे होते हैं इस तरह के, और कोई प्रोडक्ट हम बनाते हैं उसके लिए भी सर। गुड गुड, ठीक है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी के सारे पावर प्लांट होते हैं सर, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है कि पावर भी जनरेट होता है? सर पावर भी जनरेट होता है, और वो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्ट करते हैं सर। मैकेनिकल को सर इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट। जी जी जी, ठीक है। और एनीबॉडी जो कि मुझे कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल दे दे कि भाई पावर प्लांट जो है ना आपने देखा है या जगह के ऊपर है? सर हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट सर तरबेला डैम में जो है वो ग्रिड स्टेशन लगा होता है सर वो। अच्छा, गुड गुड, ये वेरी गुड। अच्छा, ये जो आप लोगों ने हाइडल पावर प्लांट्स की बात की ना, तो उसको यहाँ पे हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, एंड द रीज़न इज दैट यू हैव स्टडीड दीज थिंग्स इन योर फ्लूइड मैकेनिक्स, राइट? So here we will be, remember, discussing about the power plants where the working fluid is a compressible fluid, ठीक है? You know very well कि जैसे आपके पास स्टीम है या गैस है, these are compressible fluids, okay? तो ये जो है ना हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। वो हाइडल पावर प्लांट्स जो है, we will not be discussing those things. For that reason,
जो आपने देखा यहाँ पे कि भाई हमारे पास nozzles and jet propulsion है, that nozzles you know very well that they are used to accelerate the fluid, okay, to increase the velocity of the fluid in you know and at the expense of pressure drop. ठीक है, तो आप लोगों ने जो है ये जेट एयरक्राफ्ट देखे होंगे. बेसिकली द रीजन इज कि जितना तेजी के साथ जो नोजल है, ठीक है, उसका जो एग्जिट है, जितनी तेजी के साथ वर्किंग फ्लूइड जो है वो एग्जिट करेगा, सो एज ए रिएक्शन प्रोपल्शन एंड थ्रस्ट विल बी प्रोड्यूस्ड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, तो इतना जो है आप लोगों ने रॉकेट देखा होगा, सिमिलरली मिसाइल वगैरह देखे होंगे. ठीक है, तो दे आर हैविंग नोजल टाइप शेप. ठीक है, वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे कि भाई नोजल जो कि हम लोग अभी तक समझते हैं कि भाई एक कोनिकल टाइप हमारे पास जो है शेप होती है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि उस किस्म की नोजल हो. जो नोजल हमारे पास कन्वर्जन नोजल भी हो सकते हैं, कन्वर्जन डाइवर्जन नोजल भी हो सकते हैं, बट एक्चुअली वी विल बी डीलिंग विद कंप्रेसिबल फ्लूइड्स. ठीक है, जिसकी डेंसिटी वगैरह चेंज होती हो. एंड सिमिलरली you know we are not talking about incompressible fluid जो कि हमारे पास वाटर वगैरह है. ठीक है, तो यहाँ पे वो हाइडल पावर प्लांट्स हम डिस्कस नहीं करेंगे. ओके, good answers, but you know the power plant is basically a power source where the power is produced. Now that power could be you know rotation of a shaft, ये भी हमारे पास एक power है, right? And similarly that could be an electricity, and that could be anything, okay, that is capable of doing work for us. Okay, so where these power or this power is produced, that power source is actually known as power plant. Okay, so you might have seen you know commercial aircrafts and similarly military aircrafts. Okay, and you might have heard about you know rockets and missiles and jets, etc. So all these are basically powered by the gas turbine. Why gas turbine? Why not you know IC engines, internal combustion engine? Because they are also power plants. Okay, so we will discuss these things in that particular topic, that why gas turbine is used in the aviation industry. Okay, there is a particular reason behind that. Okay, so the power plant or the power source, okay, that is basically we have actually different types of power plants. We have gas turbine power plants, we have steam turbine power plants. Similarly, you know for electricity production we have stationary gas turbine power plants, like if you might have heard about KISCO, that is Karachi Electric Supply Company. So most of their power units are gas turbine units. Okay, that is stationary gas turbine units. We will be discussing those things, that the gas is used as a working substance and the power is produced, the shaft rotates, and if you put permanent magnets, okay, at the two sides of those that shaft, okay, and due to electromagnetic induction, the magnetic field lines, they are cut, and you know very well that EMF in that case will be produced. And what is that? That is basically your electricity. So if the gas turbine power plant works in stationary form or in the stationary unit, is a stationary unit, the electricity is produced. Okay, but if you want just you know to rotate an object using the gas turbine power plant, so that is actually the that is in open cycle, and you might have seen these things in the aircraft engines, okay, in the form of aircraft engines. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास gas turbine cycles में what we will be discussing the components of a gas turbine plant, okay, and similarly the working principle, that how the gas turbine power plant works, and similarly the practical open and closed gas turbine cycles. ठीक है, that is known as Brayton or Joule cycle. जिस साइकिल के ऊपर आपके पास गैस टरबाइन पावर प्लांट काम करता है उसको हम कहते हैं Brayton cycle or Joule cycle. So we will be discussing this thing in detail. Then we have the constant pressure cycles, okay, and then we have the use of the power turbine. Why power turbine is used, okay, so ये सब topics हैं जो कि हम discuss करेंगे.
and there is also the use of parallel flow units, ठीक है, कि पावर टरबाइन जो है ना हम क्यों यूज करते हैं, पैरेलल फ्लो यूनिट्स हम क्यों यूज करते हैं गैस टरबाइन पावर प्लांट्स में. सो वी विल डिस्कस अबाउट दोस थिंग्स. ओके, इफ यू ऑपरेट द गैस टरबाइन इन इट्स बेसिक साइकिल, जिसको हम ब्रेटन साइकिल कहते हैं, तो उसकी एफिशिएंसी जो है बहुत कम होती है. ओके, अराउंड 17 to 30% एफिशिएंसी होती है. सो हाउ टू इंक्रीज दैट एफिशिएंसी, वी नीड टू मॉडिफाई दैट साइकिल. एंड व्हाट आर दोस मॉडिफिकेशंस to the basic cycle are intercooling, that is one modification between the compressor stages, and then we have reheating between turbine stages, and then we have the use of heat exchanger. Okay, so if you use the intercooling, reheating and heat exchanger process, the cycle is modified a little bit, and due to this modification the efficiency of the gas turbine increases. So we will be discussing these things जो कि basic thermodynamic इसकी पीछे involve है, तो उस चीज को जो है ना हम डिस्कस करेंगे, and that is your gas turbine cycles and chapter 9 in the book written by M.S.K. Right? Okay, then chapter 10 is about nozzles and jet propulsion. What nozzles are, how you can design the nozzle or shape the nozzle. Okay, what are the inlet parameters, what are the outlet parameters, and similarly some equations that we will be deriving from the nozzles, and how the nozzles are used in jet propulsion. ठीक है, jet propulsion में कैसे हम इसको यूज करते हैं. Right, as I told you that the nozzles are used to accelerate the fluid. Okay, so how you are using the jet propulsion in the basic ramjet, ठीक है, and the turbojet and the turboprop and the rocket propulsion. तो इस चीज को जो है ना हम डिस्कस करेंगे in chapter 10. Right, and then after that we have actually two topics. Those are, you can say, they are actually the mirror image of each other. One is the turbo machine and the other one is the positive displacement machine. In positive displacement machine that we will be discussing in chapter 12, what happens is that a specific amount or a specific volume of the working fluid is taken in, and a positive work is done on that volume, and it is delivered at elevated energy or elevated pressure. So that is basically जिस तरीके से आपके पास reciprocating compressors हैं. ठीक है, so reciprocating compressor क्या है कि it takes a certain volume and then pushes it toward the discharge. ठीक है, और जितने टाइम के लिए जो है ना ये डिस्चार्ज नहीं होता, तो वहां पे आपके पास दूसरा वॉल्यूम जो है वो नहीं आप लेते. ठीक है, so this is, you can say, sort of intermittency is there. So this is actually known as positive displacement machine. So we will be discussing about reciprocating compressors, and similarly we will be talking about reciprocating compressor excluding clearance volume and including clearance volume. Then why we are going from a single stage to multi-stage compression, okay, and some analysis of this. And there is another topic that is also here in the positive displacement machine, that is known as rotary machines. Okay, या vacuum pumps, air motor, etc. तो ये जो है ना हम डिस्कस करेंगे in chapter 12, right? In chapter 11, that is turbo machinery, or you can say rotodynamic machinery, where the volume of the working fluid is constantly coming, or the working fluid is constantly coming, and it is actually pushed or it is accelerated constantly, okay, by the rotor and deliver it to the exit. Okay, so इसमें जो है ना हमारे पास जो मुख्तलिफ किस्म की मशीनरी है, तो उसको जो है ना हम डिस्कस करेंगे, जिसको हम रोटोडायनामिक मशीनरी कहते हैं. ठीक है, दैट द वॉल्यूम इज जैसे सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर है. ठीक है, सिमिलरली हमारे पास वी हैव द एक्सियल फ्लो टर्बाइंस, ओके, एंड एक्सियल फ्लो कंप्रेसर एक्सेट्रा. ओवर देयर a specific volume is not taken in, but the working fluid is coming, and they are just accelerating that working fluid, okay, in order to elevate the pressure. तो इसको जो है ना हम डिस्कस करेंगे डिटेल से, इसकी बेसिक थर्मोडायनामिक्स को भी हम देखेंगे. दैट इज अबाउट द टर्बो मशीनरी, एंड एट द एंड वी विल डिस्कस अबाउट रेसिप्रोकेटिंग इंटरनल कंबशन इंजन. एज फार एज दिस पर्टिकुलर चैप्टर इज कंसर्न्ड, सो प्रीवियसली द प्रैक्टिस वाज कि मैं जो है ना यहाँ पे स्टूडेंट्स, बिकॉज आई थिंक वन वे आर द अदर you have studied about and you have done, you know, some of the experiments maybe in your lower classes, कि भाई आईसी इंजन क्या है, इसका कूलिंग सिस्टम किस तरह होता है, वर्किंग फ्लूइड किस तरह होता है, ब्रेकिंग सिस्टम किस तरह होता है, वी हैव हाइड्रोलिक ब्रेक्स,
we have actually pneumatic brakes, ठीक है, what is the cycle upon which this IC engine works. तो ये थोड़ा बहुत आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा थर्मोडायनामिक्स की लैब में. तो इसलिए जो है ना मैं the practice was कि I was giving the presentations to students, okay, in groups, and वो submit करते थे on campus. They were required to present in front of their classmates, but चूंकि previously भी हमने जो है ये online से वो लिया था spring 2020 में, so they just have prepared the presentations and they have sent those presentations to me. Okay, but this time I will try to at least involve myself also. I will also deliver some lectures in this particular topic, and then I also expect you guys to present in front of me and in front of your classmates. Okay, तो ये चैप्टर जो है ना ये भी हम करेंगे. So this is actually the overall course that we will be dealing with. Okay, तो कोर्स जो है इतना डेंस नहीं है obviously. अच्छा, एक बात आप याद रख लें, it is very important that you need to refresh the knowledge of your basic thermodynamics. Okay, because यहाँ पे you will see कि even when you start from this chapter 9, that is gas turbine power plant, it will be referring to different equations and different processes that you have studied earlier. ठीक है, जैसे polytropic process क्या है हमारे पास. Similarly, we have actually isothermal process, and what are the relationships between the pressures and the volumes and the pressures and the temperatures etc. for a particular process. ठीक है, polytropic process के लिए if you want to relate the pressure with temperature, ठीक है, तो वो क्या होगा कि भाई P2 by P1 is equal to T2 by T1 gamma minus 1 by gamma, something like these things. तो you need to refresh those things. ठीक है, और लकीली ये भी इसी बुक में है, तो चैप्टर 3 मोस्टली जो है उसको रेफर करता है. तो यू नीड टू एटलीस्ट रिफ्रेश द चैप्टर 3 ऑफ दिस पर्टिकुलर बुक. ठीक है, आप लोगों ने थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा भी होगा, लेकिन दे आर रेफरिंग टू दोज प्रोसेसेस. तो यहाँ पे हम उन प्रोसेसेस को डिस्कस नहीं करते हैं. वी एज्यूम कि भाई आप लोगों को वो आता है, तो इसलिए जो है वी विल मूव फॉरवर्ड फ्रॉम दोज थिंग्स. And you need to know that basically these processes by default we understand that you know about these processes. ठीक है, तो ये thermodynamics का थोड़ा सा जो है ना आप अपने लिए रिफ्रेश करेंगे. ठीक है, अगर आप लोगों को आता है that is very good, if not then you need to refresh your knowledge of that thermodynamics. ठीक है, बुक्स के बारे में मैंने आपको बता दिया कि भाई बुक्स जो है ना आप लोगों ने कहाँ से लेनी है और कैसे लेनी है. बल्कि सीधे साधी एक बुक है जो कि बहुत पुरानी बुक है, वहाँ से जो है ना आप हम इंशाल्लाह सारी चीज़ें पढ़ेंगे. As far as the OBE requirements are concerned, I also have this document in front of you. Actually, these are the SKILOs, this course learning objectives. Okay, तो वो जो है ना आपके सामने है. And how we are mapping those CLOs with PLOs. So ये भी आपके पास है कि भाई हम जो है ना अपने स्टूडेंट से या प्रोग्राम लर्निंग ऑब्जेक्टिव से अपने कोर्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव कैसे मैप करते हैं, उसको क्या वेटेज देते हैं. यू कैन आल्सो लुक एट दिस. ठीक है, दिस थिंग. तो थोड़ा सा जो है ना आपको ये भी पता चलेगा कि भाई हमारे पास जो है CLO PLO की मैपिंग क्या है एंड व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम OBE. राइट. So I think हम जो है although I have this lecture of gas turbine cycles, but I think we can quit here at this point. Yes, sir. And if you have any question as far as this summary of the course is concerned, you can ask me. Okay, and inshallah in the next class we will be talking about gas turbine cycles. Okay, that will be our lecture 1, and that is chapter 9 in this applied thermodynamics by M.S.K. So any question in today's class or today's discussion? सर जी पूछे. सर ये पावर प्लांट को हम बाकी सर जो पावर जनरेटिंग डिवाइसेस है उनसे कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? नहीं, जितनी भी आपके पास पावर जनरेटिंग डिवाइसेस है ना वो सारे पावर प्लांट्स ही है. सर मिसाल के तौर पर हमारे पास इलेक्ट्रिक मोटर है सर, वो भी पावर जनरेट करता है. ठीक है. अच्छा, इलेक्ट्रिक मोटर जो है ना वो पावर जनरेट करता है, लेकिन उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है?
ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर में आपके पास क्या, बल्कि इलेक्ट्रिक मोटर को आप थोड़ा सा एग्जेजरेट करें, बड़ा करें, एनलार्ज करें ना, तो मैं आपको ये कहूंगा कि भाई आपके पास एक रिवॉल्विंग शाफ्ट है, ठीक है। मोटर में क्या होता है, आपके पास वाइंडिंग्स होती है ना, तो आपके पास एक शाफ्ट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी, वो शाफ्ट जो है वो रोटेट करता है, ठीक है, और या वो पैनल रोटेट करता है, उसकी दोनों तरफ जो है ना आपके पास वाइंडिंग होती है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो ड्यूरिंग दैट रोटेशन it basically cuts the magnetic field lines and electromagnetic induction takes place and EMF जिसको आप जो है ना इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, वो प्रोड्यूस होती है। आप इलेक्ट्रिक मोटर इज एक्चुअली समथिंग एल्स। इलेक्ट्रिक मोटर बेसिकली जिसको आप यानी पंप के तौर पे यूज करते हैं ना, तो इलेक्ट्रिसिटी इज एक्चुअली द इनपुट and it takes the water, let's say, from a lower energy and take it to the higher energy level, यानी उसका जो है ना एच बढ़ाता है टैंकी की तरफ, अगर उसको ऊपर लेके जाता है ना, तो इसका why, because P is equal to rho GH, ठीक है, तो इसका H अगर बढ़ता है, rho G सेम है तकरीबन, तो इसका मतलब ये कि इसका प्रेशर बढ़ गया, ठीक है। तो प्रेशर बढ़ाने के लिए आप क्या करते हैं, बेसिकली यू आर यूजिंग द पावर सोर्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो पावर प्लांट में हम बात करते हैं ना, ओवरऑल पावर प्लांट जो चीज है, दैट इज बेसिकली वेयर द पावर इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। जैसे आप लोगों ने, अब वी विल डिस्कस दीस थिंग्स, जैसे गैस टरबाइन पावर प्लांट है ना, आप लोगों ने जहाजों में देखा होगा, तो वर्किंग फ्लूइड आता है एंड इट इज कंप्रेस्ड एंड देन इट इज कंबस्टेड, ठीक है। सो द प्रेशर ड्यू टू दैट कंप्रेशन ये इंक्रीज होता है, और कंबशन जब आप करते हैं तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है। तो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर गैसेस को फिर हम टरबाइन में एक्सपेंड करते हैं। A turbine is basically a work producing device, ठीक है। During that expansion, the work is produced, ठीक है, and that work is basically if you multiply that with the mass flow rate, तो उसको उसी को हम जो है ना पावर कहते हैं। So for that reason, this is basically a power generating or a power source, इसलिए जो है ना ये हमारे पास पावर प्लांट है, ठीक है। यस सर। अच्छा, इसमें जो है ना कुछ ऑक्सिलरी टॉपिक्स भी हैं, जैसे आप कह सकते हैं कि भाई दो चीजें हैं, एक पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस है, ठीक है, जैसे टरबाइन है हमारे पास, एंड अदर वन इज पावर कंज्यूमिंग डिवाइसेस, जो कि हमारे पास कंप्रेसर्स हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया ना कि जो हमारे पास रोटोडायनामिक मशीनरी है, ओवर देयर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द गैस टरबाइन, सॉरी द इंजन्स, ओके, द स्टीम इंजन्स, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इफ यू लुक एट द चैप्टर 12, तो चैप्टर 12 में जो है ना हम डिस्कस करते हैं पावर कंज्यूमिंग डिवाइसेस को, ठीक है। वहां पे कंप्रेसर्स हैं, चाहे वो रिसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर हो या रोटरी कंप्रेसर हो, तो वो पावर कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो इस तरह नहीं है कि मतलब इस पावर प्लांट के कोर्स में जो है ना हम जस्ट पावर जनरेटिंग यूनिट सी डिस्कस करेंगे, बट एक्चुअली सम वन वे और द अदर दे विल बी like we will be discussing about either power consuming or power producing units, okay. So for that reason this is basically under the umbrella of power plants. जी, any other question? सर जी, हमने जो लाइब्रेरी से किताब हमें मिली वो तो अल-वकील की किताब है सर, और एक विले की। नहीं, अल-वकील की किताब भी आप ले सकते हैं, लेकिन लेट मी टेल यू, ये जो कोर्स कंटेंट्स बनाया है ना, ये मुझसे बहुत पहले बनाया गया था, ठीक है। तो ये कोर्स बाय माई सेल्फ आई एक्चुअली लाइक द बुक ऑफ सोंटेग, जो कि जबरदस्त बुक है पर्टिकुलरली इस कोर्स के लिए भी। लेकिन ये जो कंटेंट्स है, कोर्स कंटेंट्स, इवन इफ यू लुक एट द टॉपिक्स, दीज आर बेसिकली राइट अवे टेकन फ्रॉम द बुक ऑफ स्टाफ एंड मैकान के, ठीक है। तो ये बहुत रिलेवेंट बुक है। बाकी अल-वकील में भी है, वेन वायलन में भी है, जितनी भी बुक्स आप ले सकते हैं, और ये सारों में जो है ना ये मौजूद है। सर ये किताब लाइब्रेरी में होगा? ये बिल्कुल, ये तो बहुत बेसिक किताब है, अब और नहीं है तो मैं ये सॉफ्ट आपको ये भेज देता हूँ, ठीक है। ठीक है सर, ओके, एनी अदर क्वेश्चन? नो सर, थैंक यू सर। ओके, चलिए इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास से जो है वी विल स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज गैस टरबाइन साइकिल्स, ठीक है। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। सर रिकॉर्डिंग स्टॉप, रिकॉर्डिंग में स्टॉप कर देता हूँ।